हेलो दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे कोड ब्लॉक्स को विंडोज़ प्लेटफॉर्म में डाउनलोड करते हैं। इस वीडियो को बनाने का केवल एक ही तात्पर्य है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंटों को कन्फ्यूजन रहता है, खासकर जो बिगनर्स होते हैं, उन्हें ये कन्फ्यूजन रहता है कि हम टर्बो C++ को डाउनलोड करें या कोड ब्लॉक्स को डाउनलोड करें। मेरा सजेशन यही है कि आप कोड ब्लॉक्स IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को डाउनलोड और इंस्टॉल करें। अच्छा, क्यों डाउनलोड करें? इसलिए करें क्योंकि टर्बो C++ सॉफ्टवेयर बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है। इसमें हम जो C++ में नई चीज़ें आई हैं उनको टेस्ट नहीं कर सकते, जबकि कोड ब्लॉक में कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके कारण आपको कोड ब्लॉक को डाउनलोड करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कोड ब्लॉक्स को डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं।
होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी कि कैसे कोड ब्लॉक्स को डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं। मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि कैसे कोड ब्लॉक्स में पहला प्रोग्राम कंपाइल, लिंक और रन होता है। और मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सिखाता हूँ। अभी मैं सी लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ और जैसे ही ये लैंग्वेज ख़त्म होगी मैं जावा लैंग्वेज पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। धन्यवाद।